हेलो सर। गुड मॉर्निंग शुभश्री। गुड मॉर्निंग सर। ए स्कूल पढ़वा। हाँ। अच्छा से जो फाइल स्ट्रीम टा जो प्रैक्टिकल टा काले मु करूथली सेटा सेटा हाँ। ପାଇଁ तुमको सेटिंग रे फाइल कॉन्फ़िगरेशन रे फाइल स्ट्रीम टा को एनेबल करिवार अछि। एनेबल कला परे तापरे तार से जो कोडिंग टा जो हमें पढ़िथिले जो कोडिंग टा पढ़िथिले से कोडिंग टा को हाँ। एग्जीक्यूट करिवार अछि। सेटा एग्जीक्यूट हैला पर जाके तमे एक्सेल रो फाइल हो किंबा तमरो वर्ड डॉक्यूमेंट रो फाइल हो किंबा अन्य कोनोसी फाइल को से पूरा पाथ सह सेटा तमे जदि एग्जीक्यूट करिवो ताले से डाटाटा तमरो पळे आसीबो तमरो डाटाबेस से पळे आसीबो। एटा होची बुझला। ओके सर। तो देखो एबे ट्रिगर देखो इन दिस सेशन विल बी लर्न टू इंप्लीमेंट फंक्शन इंप्लीमेंट ट्रिगर्स। A trigger is a set of TSQL statements that execute in response to certain action such as insert or delete. Trigger माने कौन? Trigger गोटे टाइप रो इवेंट जो इवेंट थ्रू रु मु गोटे सोर्स से थाई कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स रे मु ताको फायर कर पारी ताको मु एग्जीक्यूट कर पारी। फॉर एग्जांपल जेमिति धर आमे अलार्म दउचे सपोज मते काली मते उठिबार अछि सकाळ 3टा रे उठिबार अछि त आमे अलार्म दउचे अलार्म सेट करूचे सेटा फायर केतळ होची जेतळ मोर इवेंट रो एक्शन मोड रे मोर सेटा टाइम शेड्यूल होची सेतळ मोर फायर होची 3टा बदले ही मोर फायर होची। तो ट्रिगर हाँ। मोर एमिति गोटे जिंस जोटा कि डाटाबेस रे धर सपोज मो पाखरे मु जोठी मु मोर जोठी पोस्टिंग अछि सेटा होची मोर हेड ऑफिस राइट। तो मोर ब्रांच ऑफिस बहुत गुडे जगार बहुत गुडे प्लेस रे अछि तो मते प्रत्येकटी ब्रांच ऑफिस जाई कि मते डाटा अपडेट करबा दरकार नै मु हेड ऑफिस रे थाई कि भी डाटा जदी अपडेट करबी प्रत्येकटी ब्रांच ऑफिस से ऑटोमेटिक मोर सेटा अपडेट हो। तो ट्रिगर मोर इंसर्ट आउट डिलीट ऊपर ही मोर हुए राइट। क्रिएट ऊपर यस सर। इंसर्ट आउट डिलीट ऊपर माने मु डाटा को इंसर्ट करबी या फिर डाटा को डिलीट कोची आउ गोटे प्रकार होई परिबो जोटा कि अपडेट मु डाटा को अपडेट करू ता ये रे मोर ट्रिगर टा अप्लाई एंड ट्रिगर टा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण मल्टीपल एरिया रे जदी मते एट ए टाइम जदी डाटा जदी अपडेट करिवार अछि किबा एट ए टाइम जदी इंसर्ट करिवार अछि या फिर डिलीट करिवार अछि ताले तमु ट्रिगर दरकार। जे ट्रिगर न होची तारे तुमको इंडिविजुअल वेराइटी प्लेस रे तुमको से ऑपरेशन टा करबा पड़े बुझला शुभश्री। यस सर। is used to ensure data integrity. Let us discuss different types of trigger. Trigger of the following type, that is DML trigger, data manipulation language trigger, and DDL trigger, data definition language triggers. DML triggers fire automatically in response to DML statement. Do not return data to the user. Ensure data integrity. Execution of DML trigger creates the following temporary table called as magic table. Inserted table is contains a copy of all the record that are inserted in the trigger table. Deleted table contains a copy of all the record that have been deleted from the trigger table, right? तो DML हो किंबा DTL हो ट्रिगर जेतले अप्लाई करा होची से ट्रिगर ता मोर मैजिक टेबल माने टेम्परेरी टेबल ऊपर म जदि अप्लाई करिया पड़िबो ताले मु इजीली ताको अप्लाई कर परिबी ताको इजीली इंसर्ट कर परिबी कारण मोर ओरिजिनल डाटाबेस रे मु साधारणतः बेसी की हेराफेरी करंती ओरिजिनल डाटाबेस जेमति अछि सेमति जदि मोर रिक्वायरमेंट डाटा अनुसार मत जदि रिट्रीव करिवार अछि सेटा होची यूजर रिक्वायरमेंट डाटाबेस से हिसाब रे मु डाटा को रिट्रीव करबी डाटाबेस रे मोर परमानेंटली रहे से जो डाटा को रिट्रीव करी डाटा को इंसर्ट करी डाटा को डिलीट करी डाटा अपडेट करी से सब केस रे तमरो ट्रिगर टा को अप्लाई करा एंड जो ट्रिगर टा अप्लाई हुए सेटा तमरो मैजिक टेबल ऊपर माने टेम्परेरी टेबल ऊपर तमरो अप्लाई हेले तमरो रिक्वायरमेंट अनुसार तम डाटा को शो करबे राइट बुझला। यस सर। Depending on the operation that is performed, DML trigger can be further category as insert trigger, update trigger, and delete trigger. Insert trigger is fire when new record is added. Update trigger is fire
when an existing record is modified. Delete trigger is fired when a record is deleted. Deleted. Depending on the way the trigger are fired, DML trigger can be further categorized as after trigger and inserted off trigger, right? After trigger mane kono fires after the execution of the DML operation for which the trigger is defined. After trigger mane kono jemiti dhara mote moro gote employee table salary gote column अछि, right? Salary column re mu salary jeti value अछि se value insert hela ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ overtime या फिर ମୁଁ ସେଥିରେ bonus add କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। bonus ଯଦି add କରିବି it means कोन कि salary column रे already मोर value थिबा दरकार हेले ମୁଁ bonus टा add करतरी। तो से जो माने bonus टा add होची सेटा होची मोर after trigger माने insert हला ପରେ salary column रे मोर value insert हला ପରେ जाके ମୁଁ value ମୁଁ bonus टा add करी, right? Instead of trigger meaning kono execute instead of the event that caused the trigger to fire can be created on both a table as well as a view. DDL trigger is fired in response to DDL statement is used to perform the administrative tasks. Nested trigger trigger can be nested as shown in the following figure, that is department, employee, employee pay history. तो डिपार्टमेंट टेबल रे जदि मु ट्रिगर जदि अप्लाई करूची से डिपार्टमेंट टेबल रे जो एम्प्लॉय टेबल टा मोर लिंक अछि तो डिपार्टमेंट टेबल रे जदि मु अपडेट करूची ताले ऑटोमेटिकली मोर सॉरी डिलीट करूची तो ऑटोमेटिकली मोर से रो टा मोर एम्प्लॉय टेबल रे डिलीट हे जिवो। जदि एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय हिस्ट्री टेबल जदि लिंक अछि तो एम्प्लॉय टेबल जदि मोर डिलीट होची ताले मोर सेटा एम्प्लॉय हिस्ट्री टेबल भी डिलीट हे जिवो। Deleted. बुझला? Yes, sir. Recursive trigger eventual call itself as special cases of nested trigger can be of the following type, that is direct and indirect. The direct recursive trigger fires and perform an action that causes the same trigger to fire again, right? Direct trigger तमरो सही टेबल ऊपर जतले मु जदि किछि टेबल माने ट्रिगर अप्लाई करछि सेम टेबल ऊपर जदि अप्लाई करछि सेटा को डायरेक्ट ट्रिगर माने सेम टेबल रे मोर अपडेट किबा मोर इंसर्टेड किबा डिलीटेड मोर हबो सेटा। Indirect recursive trigger जोडे कोन थर्ड पार्टी, राइट? Fire a trigger and on another table and eventually the nested trigger ends of the firing the first trigger again, right? जेमते एटा मोर एटा धर मोर मु टेबल ए रे मु रो अपडेट कली से रो टा मोर अपडेट हला टेबल बी रे से टेबल रो टा मोर अपडेट हला मोर टेबल सी रे एंड टेबल सी रे जेटा अपडेट हला से ऑटोमेटिकली मोर फायर कला टेबल ए को। तो इनडायरेक्टली मोर टेबल ए को अपडेट करिया पे मोर इनडायरेक्ट रिकर्सिव ट्रिगर मोर यूज करा हो। बुझला? Yes, sir. जेमिति धर तमे आदि सर को आम बुद्धदेव को किसी फोन कल, राइट? तो सीए धर तमे कहबो जे मते मते फिजिकल क्लास दरकार हला तो तमे मु क्लास करूची तो तमे मते कहले मु तमर नै पाथांती कि फिजिकल क्लास दरकार कि तमरो प्रैक्टिकल दरकार कि मु तुमको प्रोजेक्ट असाइन करबी कि मु तुमको आ कोन असाइन करबी तमर जा रिक्वायरमेंट तो सेटा मते तमे डायरेक्ट करथले थांदा। तो तमे जदी कहबो जदी आदि सर मु जदी कहबो, राइट? तो तमे कोन चाहिलो जे आदि सर मते कहबो बट आदि सर मते कहबेनी। आदि सर तमे जणे गले तमु कोन कहबे जे मु सेथरे जाननी जे क्लास नोची ताको सहित तमे कंसल्ट करो माने इनडायरेक्टली आदि सर मते कहबा बदल रे से तम थ्रू मो पखु आसी। तो एटा होची इनडायरेक्ट रिकर्सिव ट्रिगर। बुझला? You want to you want to make changes in another database object. Whenever any new database object is created, which of the following trigger will you use? Whatever. Nested. What?
What is the nested trigger? Nested trigger, DDL trigger. You want to make changes in another database object whenever any new database object is created. Which of the following trigger will you use? Or database object will be created. Could have data definition language. Right? Nested trigger कौन जेताले मोर टेबल थ्रू रु मु मल्टीपल डाटा को जेताले मु अपडेट करिया पे चाहूची मल्टीपल टेबल रे सेताले मोर नेस्टेड ट्रिगर यूज करा जाय बुझला Okay. in this session we will be learn to implement trigger, implement transaction. Let us discuss how to create a trigger. Trigger are created by using the create trigger statement. Create trigger name, then code table upare tame apply korso, then after or before eguda sabu tame section tame deba. Ita hela ta syntax, ta query ta hochi eta. Creating an insert trigger. Create trigger name dala on human resource.shift. Then for insert upar more trigger ta apply hochi as declare @modified date time, then select @modified date equal to modified date from the inserted if modified date is not equal to get date, current date jota. Begin print the modified date should be in the current date, hence cannot insert. Rollback transaction, right? Trigger more apply hochi. Get fire at the time of inserting record of the shift table, right? Then roll back the insert statement if the modified date is not equal to the current date. Creating a delete trigger, create trigger name dela on humanresource.department for delete. The trigger jetale apply korcho trigger ta kon apply korcho kaha upar apply korcho insert delete या फिर अपडेट सेटा तम मेंशन करियो, राइट? As print deletion of department is not allowed, rollback transaction return. Create a delete trigger on the department table, prevents the deletion on the department table. Creating an update trigger, create trigger update employee pay history on humanresource.employee pay history for update as if update rate रे तमरो update करिया पे जदि तमरो rate update हला begin declare average rate float, then select average rate equal to average rate column ro average बा करबो from humanresource.employee pay history. If average rate is greater than to 20, then print the average the value of rate cannot be more than 20. Gets fired while updating the rate column in the employee pay history table. Rollback transaction ends. Jadi more less than 20 hela. Rollback the transaction if the average value of the of rate is greater than 20. Creating an after trigger mane insert hela pore. Create trigger name dala on humanresource.shift after delete. Sorry, after delete माने delete तमर insert हला पर तम जे delete करिया पे चाहू सेटा print deletion successfully. Get fire after delete statement is executed on the shift table, display the confirmation message. Instead of delete, create trigger name dala humanresource.project instead of delete as print project record cannot be deleted. Display message instead of deleting record from the project table. Creating a DDL trigger, create trigger name dala on database from drop table or alter table. As print, you must disable trigger safety to drop or alter table rollback. Get fire while dropping or altering tables. While managing trigger, you can perform the following operation on a trigger: alter a trigger, delete a trigger. Syntax coding.
For example, alter trigger from human dot trigger delete shift on human dot shift instead of delete. Then as print deletion of shift detail is not allowed, rollback transaction means what? Modify the trigger delete shift trigger that was created earlier to restrict the deletion of record in the shift table. Deleting a trigger, drop trigger. तमे जदि ट्रिगर टाको डिलीट करिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ drop trigger name the table that get created when a trigger is fired in response to the insert delete or update statement. Magic table inserted and deleted. Disabling a trigger trigger को disable करिया ପାଇଁ जदि पडियो माने तुमको जदि रिक्वायर्ड जदि अछि माने ट्रिगर ऑलरेडी तमे अप्लाई करछो एबे फर्दर किछ समय ପାଇଁ तमे ट्रिगर टाको डिसेबल करिया ପାଇଁ चाहछो तो ता ପାଇଁ तुम डिसेबल कमांड यूज करिवो डिसेबल ट्रिगर नेम ऑन को डाटाबेस से तमे अप्लाई करछो से डाटाबेस ता दबो डिसेबल ए सेफ्टी ट्रिगर enable कीवर्ड थ्रू तमे पास करिवो से event data function. The event data function can be embedded with the create trigger statement to provide the information such as time and type of the event that caused the trigger to fire. Return the details of the trigger in the XML format. For example, create trigger name on database for create table as print creating table. Raise new tables cannot be created in this database. Then select event data function use kala seti dot value. Then tar content pass kala. Then rollback tamara dela. The value function is used to display the data of the command text tag. You can display the event information after the execution the create following table statement, that is create table name. Then customer data variable tama declare kala goto hoche customer name out salary. After executing the preceding statement, the info underscore event trigger is fired and the output is displayed as soon in the following figure, right? Tamara output se display kariyo par program statement. Trigger practical kariyo hame. What is a transaction? A transaction can be defined as a sequence of operations performed together as a single logical unit of work. Let us discuss about a banking transaction where the amount is debited from the one account and credited to another account. Banking transaction, debit and credit. Transaction successfully. Transaction unsuccessful. तम योर डेबिट है सॉरी मो योर डेबिट है तुम पाखु पैसा पड़ी सेटा केबे ही परिबो ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल तमरो डेबिट है मो पाखु क्रेडिट है ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल माने एमिति हुए जे तमरो डेबिटेड हे जेथिबो मो पाखु आसी नथि तो से कोन हुए तो तुमको फोन थरे तार गोटे टाइम फ्रेम अछि से तमरो पुनी अमाउंट ता पुनी रोल बैक थी तुम पाखु रिटर्न हो जाए. A transaction must possesses the following properties called ACID, माने atomicity, consistency, isolation, durability. Atomicity, either all the data modification are performed or none of them are performed. Consistency, all the data is in a consistent state after a transaction is completed successfully. Any data modification made by one transaction must be isolated from the other concurrent transaction. Any change in data by a completed transaction remains permanent in the systems.
आर प्रैक्टिकल काली करिबा तमरो प्रोजेक्ट स्टार्ट कलानी ना पढुतली काली उस गूगल रे खोजी खोजी अच्छा हो आराम से करो सेटा भलो ये जिंसटा बहुत जिंस तमे जानिबो राइट एटा बहुत जण करिसन बट से प्रोजेक्ट रो बहुत जिंस तुम शिखिया को मिले राइट एटा नो जे मोर बहुत जण करिसली बोली नो किंतु एटा जे से प्रोजेक्ट जो दिया हिची से प्रोजेक्ट रो बहुत जिंस तुम शिखो बहुत इन्फॉर्मेशन अछि तमर से राइट से शिखिबो यस सर को लाइव प्रोजेक्ट मु देबी हला यस सर ओके थैंक यू थैंक यू सर